Welcome, everyone. We're really happy to do this panel and this launch today on the occasion of World Wetlands Day. I'm Yutika Vura. I'm the co-founder of Nagrik along with Tarun. For those of you who don't know, Nagrik is a small think tank. We're based out of Dehradun, and we set up in 2017. We set up in 2015 with the aim of shaping unique, authentic, and resilient cities. A lot of our work has gone on creating knowledge about small cities, which we found that there was not enough knowledge to create policies that were designed for them. And with the recent initiatives, we've been working to empower small cities to be at the forefront of climate change solutions by fueling the imaginations of citizens from these cities and the communities and decision makers to think of new perspectives that can help our small cities become what they ought to be, which is unique, resilient, and authentic. This report is part of the Nagrikal program that Nagrik does, in which we wanted to create a space for people from small cities and researchers from small cities to interact, to discuss, to kind of put forth new thought. And this publication on wetlands also contributes towards this broader goal of creating these climate-ready cities. While it is focused on urban wetlands, the goal is to look at it as it's situated in the city itself and how it works with the city and how citizens can interact with these wetlands to help make the cities better spaces for everyone involved. It has a special emphasis on lakes as urban wetlands. It highlights the unique benefits and adaptability of lakes in an urban setting. Namisha, if we can quickly just do an introduction of the panelists before we get to the conversation. Good morning, everyone. So our first panelist is Dr. Anil Mehta from Udaipur. He is the Joint Secretary of Jheel Sanrakshan Samiti, a non-profit working for wellness and conservation of lakes for the last 30 years. And the group has played a key role in cleaning and preserving Udaipur's lake and has been instrumental in developing the lake conservation plan and establishment of Lake Development Authority in the city. Our next panelist is Dhurba Das Gupta, who is a wetland researcher and project director of Scope Kolkata. Her expertise lies in working with wetland community on action research issues, with a special emphasis on peri-urban wetlands, which are especially threatened due to the proximity to the city. And lastly, we have Mr. Rupankar Bhattacharjee, who is the founder of Kumbagi Kagaz, an enterprise which manufactures handmade paper out of water hyacinth, that is an invasive weed causing ecological imbalance in wetlands. Kumbagi Kagaz aims at ecologically restoring Deepor Beel, the lone Ramsar site of Assam, along with providing livelihood opportunities to the community dependent on it. So over to the panelists for today and the panel discussion that we are waiting for. Very warm welcome, welcome to all of us present into the city of Kolkata and to the wetlands that are the East Kolkata Wetlands, as well as I must mention Kolkata was a very wetland rich city. The core city was very rich in wetlands, but and also in something called small ponds or pukurs. We call it pukur in Bengali. So it was very rich, and though there still are many ponds, Kolkata is more wetland poor today than it used to be. But my concentration in this presentation will be on the East Kolkata Wetlands. But I thought because it is World Wetlands Day, I must mention that within Kolkata also, within the core city also, there was a wetland-rich character. So that is our lesson that we carry within us and try to spread whenever we get an opportunity to. That being said, I must first thank Nagrik for taking this initiative to bring out a report on something that is very close to my heart, which is wetlands and small cities and how wetlands can contribute to improving the resilience of small cities. So thank you to Nagrik, and
I'm very happy to be able to contribute to today's discussion. What we also found while trying to work on this was that West Bengal and that area has actually a higher concentration of wetlands, apparently. Yes, because this is the Bengal Delta is a very water-rich place. And water is what actually connects us, our histories, our trade and commerce, our culture. So that's, and unfortunately now it has become the cyclone capital of the world, the Sundarbans. So that is another something that was quite avoidable, but we really mismanaged our water resources. This was a groundwater rich area, and we played havoc with that. Even now we haven't learned enough lessons. Or, the people who, there may be many people to speak about water conservation, but there are far fewer people to practice water conservation. That is the actual challenge. This is what I've chosen to call it, the citizens by the side of the East Kolkata Wetlands, because the East Kolkata Wetlands are a very small version of what used to be called the Salt Lakes. And when the British came and chose Kolkata, or Calcutta as they used to call it, for settlement purposes, they really didn't know how to respond to these huge salt marshes, because these salt marshes were actually the interdistributary marshes of the Ganga Delta. And they were, there was a river called Bidyadhari, which used to flow and come right up to the, almost the heart of Kolkata city. And it used to be called Central Lake Channel when it was close to Kolkata city. And it used to be, a flourishing river. And Bidyadhari's task, it was actually a tidal channel. Its task was to build the unfinished part of the Ganga Delta. To the east, there were a number of other rivers which had the task of building up the delta, but to the west, this task fell on Bidyadhari. The river Ganga, this part it is called Bhagirathi or Hooghly, but the river Ganga was, had this different pathway in the earlier historical times, when it used to come down and flow through what is now called West Bengal. So this is when the river came from this side and came like this, then the pathway was it entered somewhere here through what we now know as Murshidabad, came down like this through a route that we now call Adi Ganga. But in the I think 15th, 16th century, when there was a tectonic shift and an earthquake, the course of the Ganga went this way and into Bangladesh. So all the holy sites that are associated with the river are in this part, not in what we know as Padma in Bangladesh. So all these things were associated here, and the Adi Ganga ultimately was re-excavated by Major William Tolley, and it became known as Tolley's Nala. So that was excavated for trade purposes, and that served as a very useful route to bypass the very difficult water route from now Bangladesh through the Sundarbans into what we now call West Bengal. So all of this was all Bengal. So if you had to come from the east to the west, the earlier existing routes, the waterways were very, very dangerous. But with the coming of the Tolley's Nala, he started his excavation work from around 72, and it continued up to 79. It was between 77 and 79, it was completed. And so this opened up a trade route that was that had a very strong impact on the river Bidyadhari, because Tolley's Nala connected the Ganga with the Bidyadhari, and this ultimately did a lot of damage, because this route was the riverine route was interfered with by creating lots of log gates in the wrong places that led to the silting of the river Bidyadhari, and the river then receded and pursues its current course, but it did a lot of damage.
to the livelihood and to the, the people who stayed here and to the aquaculture. So this is what you can see. This is the river, and this is the shape of the city, and this is where the wetlands are. So there are about 4 wards, 57, 58, 107, and 108 in Kolkata, which are part of the the East Kolkata Wetlands. And the whole administrative structure that therefore happens, Tarunji, can we have the next slide, please? So the whole administrative structure that happens is there are both panchayat related, because this is a cluster of 32 villages or mozas, as we call them. And subsequently, few more mozas were tried to be incorporated, but the original Ramsar list contains 32 villages, and both panchayat functionaries as well as city, urban local body and urban administration, they are both involved in the governance of these wetlands. And like it happens in many other places, these people work in silos very often. And so the whole, issues that we face about coordination between different departments has an impact on the vitality of the wetlands. So these are the people who are directly involved, and the whole idea is that these people do the sewage quality monitoring as well as distribution and the sewage supply, all of these things. This is the basic introduction to the wetlands. It's a tutorial ecosystem, and we say turning bad water into good. But basically, the whole idea is that the worldview here is that wastewater is not a pollutant, but a nutrient. And this is possible only when you have domestic wastewater, which comes into this wetland space, and which through the activities of food production, it actually extracts the nutrients, and the sewage that leaves the wetlands is treated comprehensively. The levels of treatment are monitored by the Pollution Control Board, and different researchers have worked on this. The Pollution Control Board asked the institution where I'm also engaged, which is Indian Institute of Engineering, Science and Technology in the Civil Engineering Department. And we monitor the water quality as well as the level of treatment that happens in these wetlands. And they function quite comprehensively. That is what we have found from our work and our, sample monitoring, etc. So if you look at the potential of these wetlands for small cities, the potential is huge, because small cities which have largely domestic sewage, not industrial sewage, small cities which have largely domestic sewage can, and with some amount of land and with good engineering inputs, the waste stabilization ponds, because ours is a warm climate, they are the best option for low cost but efficient treatment of wastewater, so that our rivers are kept much cleaner than they are today. And this is the key contribution that wetlands can have to human well-being. Because in India, the rate of urbanization is happening at 34% now. And up to from 2018 to 2050, according to the World Urbanization Report, India, China, and Nigeria will contribute about 35% to the urbanization, growth of urbanization in the world. And India will add about 416 million population, and this out of this, it will not just be mega cities. There will be a whole lot of small cities, because the definition of urban is quite variable.
and there are outgrowths, there are more fossil areas, there are towns, there are other urban spaces, there are municipalities, there are something between municipalities and the smaller spaces. So there's a wide variety of urban habitations, and these places can very usefully utilize the concept and the functionality of waste stabilization ponds. So the key question here is whole lot of people. We can go to the next slide. I will connect with that. There are a whole lot of people who do not know that small towns or small municipalities do not have enough money to incur high electricity costs and employ very highly skilled people to manage the more electricity heavy technical treatment options. When there is a warm climate, these can easily be used and be they can avoid incurring lakhs of rupees of electromechanical options where electricity is very costly. Conversation about ecosystem services started from 1997, when a whole lot of ecologists came together and said, okay, if wetlands are facing so much of threat, then let us look at their value. But the important part is, and subsequently when the Millennium Ecosystem Assessment happened, there was a whole report about wetlands and well-being and how the wetlands contributed. But we have to remember that contributions are not always monetizable, if I might use that term. You have to understand that wetlands, their values have to be communicated through a variety of ways all the time. And we who work on wetland conservation, we constantly have to keep thinking of what are the new ways in which we present the value of wetlands to the people. One of the ways in which we do that is 19th August 2002, when the East Kolkata Wetlands got Ramsar recognition. We use that day every year to bring out some kind of documentation where it gives a new perspective or an additional perspective on where the East Kolkata wetlands are. And those are the things that we can use to approach policymakers and to say, what do we require? What are the ways in which we can benefit? What I have not written over here, because I have not categorized them under ecosystem services in terms of the available definition. So what I have not written here is that it saves a lot of money in municipal taxes, because abroad in a standard city, a senior citizen after discount would pay about 75,000 rupees per year. From this year, it was 55,000 last year, it just jumped up to 20,000 bucks. So 75,000 rupees per year for water and sewage treatment. This is the kind of costs that have to be paid, and in Kolkata we don't pay a single penny. Right? So we don't understand the value. Yes, we can go to the next one. So this is the international recognition that the wetlands have got. And this recognition is, speaks out or lays out that if you look at the title, managing the other side of the water cycle, making wastewater an asset. And this is precisely what we need to do when we talk about wetlands as an option for contributing to the resilience of cities. And what we do, therefore, is that we learn to change our perspectives and our mindsets to stop looking at wastewater as a pollutant and see it as a nutrient when it comes to domestic sewage. This, of course, I'm not talking about industrial sewage, I'm talking about domestic sewage. This is what happens. This is how the flow of the sewage takes place, and I've placed both the maps. So here we see the river Hooghly, and in between is Kolkata city, and this is what the wetlands are. So this space is basically vegetable growing space. When the water, here is the Eastern Metropolitan Bypass,
which is the, road that brings citizens to this part of Kolkata, to the eastern fringe of Kolkata. And here we have a vegetable growing space. Here we have the maximum aquaculture space. And here we have the space where there is floriculture as well as vegetables and paddy and aquaculture all mixed. So because the resource recovery starts from here, and by the time it has reached this place, the resource recovery has happened for quite some time. Therefore, in this space, with the level of availability of sewage determines whether aquaculture will happen first or whether we will have, paddy grown. So they switch kind of what kind of food production to opt for depending upon the availability of sewage. And these are all shallow ponds. Therefore, because sunlight can reach the bottom easily, shallow ponds, oxidation ponds, therefore the comprehensive, algae bacteria mutualism, the bacteria that is most targeted for the kind of treatment that has to happen, is the pathogenic bacteria called Escherichia coli or E. coli. And E. coli is comprehensively broken down over here and treatment happens over here. And we have something called algae bacteria symbiosis. And very, very simply speaking, there is exchange of oxygen and carbon dioxide between algae and bacteria. So algae takes the carbon dioxide, bacteria takes the oxygen. There is disintegration of the bacteria, and the algae bloom because along with the sunlight, along with the phosphorus and nitrogen that comes from the city sewage, they actually can produce a lot of food and they bloom, and the fish act as the ecological manipulator. And they graze on the algae and the population is controlled, the fish grow, and the fish flourish. They take, the fish don't grow up to a very big size because then what happens is, there are lots of people employed over there. They have to be paid their daily wages. So fish cannot grow to a very big size. They are sold when it is smaller size, and we can avoid the possibility of bioaccumulation. So that, the fish which are not of a very big size, and then there is very less chance of, heavy metals settling on the, in the flesh of the fish. It can settle in the gills or muscles, etc. But gills or fins or scales, but they do not settle in the muscle, in the fish muscle, which is what we consume and which is what we eat. So it supplies probably, I don't have latest figures, but probably up to 15-20% of the city's requirement. And the very sad part is that, these wetlands are not looked upon as an asset. They are basically looked upon as an urbanization space. You need stewardship to really keep wetlands alive. And this stewardship is what the key message. Every wetland has to have a steward. And my guru, Dhruva Ghosh, he really devoted his life to the conservation and taking the story of these wetlands to the world. So in one of the earlier slides that I showed about the international recognition, he was quoted. And he, through his life, he constantly kept telling people all over the world that, these wetlands are something that you have to value for the multiple services they provide. So ironically, internationally, these are very well known and these are talked about among the community that looks at wastewater treatment. The irony is that in Kolkata, the awareness is very less. So I'll quickly go through and just one small information, which is the first Wetlands Day in the world began being celebrated in Kolkata. And this was in 1990. I showed that picture in the slide. So the UN honored him with the Global 500 Roll of Honor. And he approached the chief minister and said that this is an award for the state. Therefore, let us celebrate this by observing Wetlands Day. So internationally, Wetlands Day is celebrated from 97 onwards, but we
celebrated it first time anywhere in the world from 1990 onwards. Yeah, we can go through the next few slides because those are basically pictures just to give people an idea. Living creatively with nature is what people do over here. And because they live creatively with nature, that is what my teacher used to say, that Kolkata is an ecologically subsidized city because it has one river for water abstraction, one river for disposal. So Ganga for water abstraction and Kulti or Vidyadhuri for disposal. We have the wetlands and we have the, good groundwater, and we have food produced, which reduces the transport cost and makes the city more livable at a lower cost. So all these contribute to the resilience. And what the earlier picture slides that were shown, basically to give you a feel of all of that, how the people are engaged in it. And these are the log gates. These gates are the log gates. They're the lifeline of the city. This is an engineering marvel. It controls how the city, how the wetlands receive the wastewater and the journeys through which it will go. So living creatively with nature. Yeah. And these are all, yes. So this is my final message, that this is what was there in 2002. And last year when we did a report, this is what happens in 2023, in spite of, whatever efforts at conservation happens. And we basically say that instead of looking at how many houses are being built, you have to look at how the sewage is ensured, how there is more sewage, and how we can all encourage the community to conserve, because they will earn their livelihood. This is the basic idea. And thank you all for the little extra time that I took. So I can see Rupankar ji probably agreeing with me. Because that's how, like, I have a small startup named Kumbagi Kagaz, where we Yes, convert yes. the water hyacinth into paper. And that's the only company in India currently, but in the world, but we claim it to be in India, that is Yeah. chemical free. And the best part about our paper, which I keep on telling about to everyone, is that a normal A4 size sheet paper consumes around 20 liters of water Yes, in yes. manufacturing process, and we do it in just 2 liters. 1/10 less water consumption in manufacturing process. Yes. It's unfortunate that, we speak about conservation, we speak about wetlands, but the government really hasn't done much of ground level implementation to encourage entrepreneurship, because wetlands and entrepreneurship is a very important area of work, and that is more important for the smaller entrepreneurs, who will therefore be able to both conserve and move forward, prosper, and encourage other people to do so. So Because working with water hyacinth, I'm so sorry to interrupt you. no, that's fine. So I got like a lot of backlashes initially when I started working with water hyacinth, because we collected water hyacinth from a Ramsar site called Deepor Beel out here. And Yes. and this was a ego clash between some forest officials, because हम clean नहीं कर पाए, ये बंदा क्यों clean करेगा? मतलब then people will get a differentiation, right? कि ये बच्चा clean कर दिया, why can't this guy do? Yes. So even like forest officials, when we try to do good, they are not accepting it, and implementation तो दूर का बात. तो अभी मतलब चोरी छुपे अच्छा काम करना पड़ रहा है. That is what I am doing. Yes, absolutely. I 100% agree with you. I'm doing something good in such a way कि वो illegal है. मतलब ऐसा लगता है कि छुप छुप के जाके water hyacinth उठा के ला रहा हूँ कि कोई चीज तो ना ले मतलब. So we are talking about a very serious matter. So I think like I have a very lame joke. आप लोग को हंसी नहीं भी आ सकता है, but मैं कुछ दिन पहले water body से related. So what I do is, like, for me, when I try to aware people and I work with communities, I always try to bring something in front of them so that उनको मजा आए, क्योंकि उनको मैं जाके बोलूंगा पानी बचाओ, लेक में ये मत करो, वो मत करो, ये बोरिंग सा. वर्क विद विलेज कम्युनिटी. नाउ व्हाट आई थिंक इज दैट मैंने तो अपना सब कुछ गवा दिया है. आई स्टे इन अर्बन सिटी और मेरे पास कुछ है ही नहीं. आई डोंट इवन हैव अ प्रॉपर लाइक वेटलैंड, और मैं ही जाके उनको सिखा रहा हूँ जो जिनके पास अभी भी इतना बड़ा वेटलैंड पड़ा है और साफ है. सो उनको कुछ, लेकिन फिर भी
हम जो गलती कर चुके हैं वो अगर वो कर रहे हैं तो उसको तो रोकना है ना। तो वैसे आई ट्राई टू ब्रिंग try to make fun and bring some jokes. So before I start, I'll just tell a small joke कि जो ये वर्ड वाटर बॉडी है, ये वाटर बॉडी कहाँ से आया। तो ये मेरा जोक नहीं है, हाँ, मैं किसी और का छाप रहा हूँ आप सभी के सामने। So that I was seeing a video where this guy says water flows, then waterfall, water die, after water die, water body. So, so now we'll talk about that dead body of water. So water body. So Deepor Beel, my work area is Deepor Beel, and let me tell you guys, I am more into wildlife. My love for snakes, मुझे सांपों का प्रति इतना मुझे प्यार था। ये सुनने से आपको लगेगा कुछ अलग है, लेकिन है, मतलब मुझे कुत्तों से ज्यादा सांपों में इंटरेस्ट है। 2016, I met Dr. Jaditya Purkaister. He's a IUCN member and he's an expert in herpetofauna. तो मैं जयदीप सर से मिला और उसके बाद my love towards snakes started. और मैंने क्या किया कि I started working on snakes. मैं रेस्क्यू करना स्टार्ट किया एंड आई वॉज लिटिल बिट इंटरेस्टेड ऑन फोटोग्राफी। फोटो खींचना, सांपों को पकड़ना, उसको छोड़ने से पहले उसका सुंदर सा फोटो लेके इंस्टाग्राम में पोस्ट करना, दैट इज व्हाट माय लाइफ स्टार्टेड विद। एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड डूइंग सम रिसर्चेस ऑन स्नेक्स कि उनका हैबिटेट, न्यू स्पीशीज, करंटली आई एम वर्किंग ऑन अ कोबरा स्पीशीज नाउ। तो ये सारा काम होते होते इन बिटवीन 2017 का बात है, आई रेस्क्यूड अ ब्यूटीफुल बर्मीज पाइथन एंड मैं रेस्क्यू करने के बाद उस पाइथन को मैं दीपोर बिल, द प्लेस वेयर आई एम वर्किंग, इट्स अ रामसर साइट, द ओनली रामसर साइट इन असम, वन द ओनली रामसर साइट इन असम, वहां पे मैं उसको रिलीज करने गया, किसी पास ही में किसी के घर में घुस गया था। तो मैं जब उसको रिलीज करने गया, आई वाज इन वन हैंड आई हैड माय पाइथन एंड द अदर हैंड मेरे पास कैमरा था, ठीक है। और मैं पानी में माय वेस्ट में पानी पे बैठा था कि आई रिलीज द पाइथन एंड आई टेक अ ब्यूटीफुल शॉट ऑफ दैट पर्टिकुलर पाइथन फ्लोइंग ऑन द वाटरवेज, ऑन द वाटर सरफेस। ये शॉट लेते वक्त मेरे साथ एक ट्रेजेडी हुआ, मतलब मेरे लिए वो बहुत बड़ा ट्रेजेडी था कि मुझे वो शॉट मिला नहीं। एंड उसके लिए सबसे मतलब द मोस्ट, मतलब क्या बोलूं, मेरा एनिमी बन गया वाटर हाइसिंथ। ये जलकुंभी वहां से, मतलब हवा चला, वो होता है ना फिल्मों में दिखता है, ठंडी हवा का एक झोंका आता है, तो दैट वाज वेरी डेंजरस फॉर मी। वो आया एंड दैट covered the entire python, that water hyacinth, it is like a flowing mat, it covered the entire python। एंड उसके बाद मेरे मेरे हाथ में उसका पूंछ था और मुझे उसका सिर नहीं दिख रहा है, वो भाग गया। एंड दैट्स हाउ माय एनिमिटी विद वाटर हाइसिंथ स्टार्टेड। आई केम बैक होम, आई कॉल्ड डॉक्टर जयदीप एंड आई सेड कि मुझे तो ये पौधा क्या है, इसको खत्म करना है पृथ्वी से। आई डिड नॉट नो इट्स it was an invasive species। He taught me about this and we had to, we did a lot of research and after a lot of brainstorming sessions we came to a point कि water hyacinth से we can extract pulp and that pulp was the striking point कि हम पेपर बना सकते हैं। and मैं बहुत लेजी आदमी हूँ, तो मेरे लिए ये लेजीनेस को मैं हमेशा कुछ नया करने का कोशिश करता हूँ। तो आई थॉट कि आई एम वेरी लेजी, आई डोंट वांट टू मेक अ वेरी डिफिकल्ट सॉर्ट ऑफ अ प्रोसेस में मुझे पेपर नहीं बनाना, हाउ टू मेक पेपर एट होम। तो मैंने DIY सॉल्यूशंस देखने चालू किया एंड 2020 तक हमने रिसर्च किया। तो 2020 में मैं अपना पेपर बना चुका था जो 100% वाटर हाइसिंथ को कन्वर्ट करके पेपर में, केमिकल फ्री, विदाउट एडिंग एनी अदर केमिकल, जस्ट वाटर हाइसिंथ कन्वर्टेड इनटू पेपर, वी मेड प्रिंटेबल पेपर। देन आवर जर्नी स्टार्टेड। we wanted to work with the community and तब कुंभी कागज का फॉर्मेशन हुआ। हमने सोचा कि जल कुंभी से कुंभी लिया और कागज मतलब पेपर, बस दोनों वर्ड को लगा दिया, कुंभी कागज बन गया। वी टॉक टू द वेटलैंड कम्युनिटी और अभी वेटलैंड कम्युनिटी को यही सारे जोक्स मैंने बताया और उनको बहुत हंसी आया और उनको मेरे ऊपर भरोसा आया कि ये बंदा कुछ कर सकता है। we started working with them। So the problem with wetland community is that they used to, 10 years ago, they used to get more than 10 to 15 kg of fishes from that particular wetland। Now they can accumulate 10 kg fishes over a time span of 1 week। I said कि जब much, and now these people from villages, उनका, they are not ready to accept any new thing। उनको मछली मारने ही जाना है, they will only go for fishing and
I cannot teach them that don't go for fishing, do this. No, they won't. उनको मछली मिले ना मिले वो मछली पकड़ने ही जाएंगे. और फिर मैंने बोला कि जाओ भाई तुम अपने, that is your job satisfaction, I don't want to take you back, but I give you an entrepreneurial opportunity. आप वाटर हाइसिंथ साथ में, तो एक हाथ से मछली लाते हो, दूसरा हाथ खाली मत रखो, उससे वाटर हाइसिंथ लेके आओ. And that's how I started balancing with them. और लास्ट 2 सालों से कुंभी कागज चल रहा है. And in between, I tell you what impact assessment I did, because मैं scientifically तो उतना नहीं जानता about waterways. Water hyacinth का all these problems, like it reduces the water capacity, it reduces the water holding capacity, brings siltation. And siltation से एक चीज मैं बताता हूँ. There is a bird species called pheasant tail jacana. I have been doing bird census for the last 5 years in Deepor Beel. मुझे 5 सालों में degradation of birds and the species मुझे पता है. There are 5 to 10 team leaders रहते हैं, उसमें से I lead one team and I do this bird census. परसों मेरा बर्ड सेंसस था. आई कंप्लीटेड एंड आई हैव सीन द ड्रास्टिक चेंज की, मतलब लास्ट ईयर से इस साल कितना कम हुआ है बर्ड्स. तो देयर इज अ बर्ड नेम पीजन टेल जकाना. सो देयर इज, दिस थिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग आल्सो. सो यू कंसीडर this particular hand of mine as the bottom surface of this is water surface and this is the soil surface. ये दीपोर बिल का मैं बोल रहा हूँ. So this is water surface where water hyacinth floats. Now every year this water hyacinth will die and settle down. And every year this keeps on happening. और अभी क्या हो रहा है, day by day वो जब भी मर के नीचे चला जाता है, वो सड़ जाता है, it turns into soil, and day by day it is growing, the bed is growing, and the distance from the water surface is reducing. Now the interesting fact, water hyacinth will bring siltation, but there is another plant which we call as this foxnut, जिसे हम लोग मखाना, we have makhana, right? Looks like that desi popcorn thing. So makhana का जो plant है foxnut leaf, on foxnut leaf lays like pheasant tail jacana will lay eggs on the foxnut leaf. Now foxnut leaf germinates from the surface bed and reaches the water surface, right? अभी क्या हो रहा है, पहले वो नीचे से ऊपर तक आता था and it used to bloom around mid-March or April, and that is the breeding time for pheasant tail jacana. Now the distance has reduced, so they bloom earlier, January to February. Till March they are no longer now capable of holding the eggs, और जब pheasant tail jacana अंडा देती है, it will collapse, break down, and that's how there is breeding failure taking place in pheasant tail jacana. And for the last 3 years I've seen a declining numbers of pheasant tail jacana. It is a very beautiful native bird. ये migratory नहीं है, native है, but it's very very beautiful bird. So these are some things which I have observed. And last year we cleaned around 42 tons of water hyacinth from my area, from where I am working. It's just a small part of Deepor Beel. And we have seen growth of makhana this year. So that is my impact that my company could do. That is a small thing which I started with, and I hope so. और सांपों का रेस्क्यू चलते रहता है. ये 2 ही चीज मैं करता हूँ एसोसिएटेड विद वेटलैंड. और देखते हैं, आशा करता हूँ कि ये जल, मतलब आई वांट टू कम टू दैट पॉइंट जब लोग प्ले कार्ड लेके खड़ा रहे कि सेव वाटर हाइसिंथ. अभी तो हम लोग वाटर हाइसिंथ इरेडिकेशन का बात चल रहा है ना. आई वांट टू टेक इंडिया टू दैट लेवल कि लोग वाटर प्ले कार्ड लेके खड़ा हो जाए कि सेव वाटर हाइसिंथ. मुझे वो दिन देखना है. सो इफ यू टॉक अबाउट माय 5-year plan, that is what I want to see. Thank you so much. I won't take much time क्योंकि this is what I had to see. Tarun ji, can I add something? Yes, please, Anil. So, Rupankar, बड़ा अच्छी हाँ जी. मजा आ गया तुम्हारी बात सुन के. बट हमने so we were having this problem of water hyacinth, right? मैं आपको एक छोटी सी 2 मिनट लेते हैं तरुण जी, आप अगर आप परमिट करें तो. मैं एक स्लाइड दिखाना चाह रहा था फॉर दी नॉलेज एंड नॉलेज तो नहीं, नॉलेज उनको काफी है, थोड़ा उनकी जानकारी के इंफॉर्मेशन के लिए. ये देखिए, दिस वाज द प्रॉब्लम ऑफ वाटर हाइसिंथ. जो मैंने आपको पहले लेक का फोटो दिखाया ना पिछोला का, वो सेम पिछोला है ये. So it used to be full of this water hyacinth, right? Full. And you very rightly said, so this kumbi, when it gets decomposed, it gets submerged to the bottom, and it creates the what you call the oxygen zero environment, and that is
प्रिसाइसली द कंडीशन ऑफ यूट्रोफिकेशन, राइट। तो ये, और आपने रूपा जी ने बताया, वैसे तो कोलकाता में भी सब जगह भी, so when the water hyacinth is in control, it acts as a filter plant, so it absorbs lot of heavy metals, right? तो पर इसका चक्कर यही कि अगर ये फैल गया तो ये दिन दुगुना रात चुगुना वाला मामला है इसका, ऐसा फैलता है। So we are having this problem, and every year there used to be big contracts on it, and हम लोग भी कंपेन करते थे, खूब बड़ी बड़ी कंपेन करते थे। फिर हमें ध्यान आया कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च है उसने 2 विविल्स इंट्रोड्यूस किए। The name is the Neochatina Eichornia, Neochatina brucei, right? So when you introduce this weevils on this water hyacinth, they are native to this, इसी पे पलते हैं। वाटर हाइसिंथ बेसिकली ब्राजीलियन ओरिजिन का है ना, तो थोड़ी जगह आप रखेंगे वाटर हाइसिंथ को तो आपके पानी को बहुत साफ रखेगा, क्योंकि इतना अच्छा ये, इसमें मतलब बायोरेमिडिएशन का एक बहुत बड़ा प्लांट है ये, अगर आपको बायोरेमिडिएशन करना है। पर प्रॉब्लम ये, अगर फैलता जाए तो अगर लेक के अंदर सीवेज बहुत आ रहा है, which is lake or river is full of organic matter, then it will grow like anything. ये जो weevils है ना, Neochatina Eichornia, Neochatina brucei, तो ये देखिए जब when you introduce this Neochatina, वो उसके nocturnal होता है, ये उसकी रूट में रहता है और रात को चलता है उसके तने के अंदर, राइट। तो जाइलम फ्लोएम जो भी आप बोलते हो सबको खा जाता है वो प्लांट्स पे रिड्यूस होता है साइज में, राइट। इट्स ए बायो कंट्रोल। सो इट वाज अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब ब्राजील से लाए यहाँ पे, और हिंदुस्तान में जगह जगह इसको इंट्रोड्यूस किया। वी एज सिटीजन्स, वी रोड टू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, देन वी, इसको हमने सरकार के थ्रू मंगवाया उसको, ये आज भी वो सबको सप्लाई करते हैं फ्री में। तो ये फ्री का आपका कंट्रोलर है वाटर हाइसिंथ का, राइट। पर वाटर हाइसिंथ, इफ इट इज इन एक्सेसिव ग्रोथ, इट्स इंडिकेशन ऑफ यूट्रोफिकेशन ऑफ वाटर बॉडी। इफ लेक इज कवर्ड बाय वाटर हाइसिंथ, इट मींस द लेक इज इन द कंडीशन ऑफ डेथ, लेक इज डाइंग, राइट। इसलिए बहुत जरूरी है, वो सबसे बड़ा इंडिकेटर है व्हेन लेक सरफेस, और जब लेक सरफेस पूरा भर जाएगा वाटर हाइसिंथ से तो आपका सनराइज भी नहीं जाएगा अंदर, बिल्कुल। तो वैसे भी ऑक्सीजन डेफिशिएंट और वाटर क्या वो लाइट लेस एनवायरनमेंट बनना शुरू हो जाएगा, है ना। फिर आपकी जानकारी के लिए मैंने हमने किया, देखिए हमने स्टडी भी बताया आपको, ये जब 1999 में जब हमने पेपर बनाया उस वक्त हमने ये भी इंट्रोड्यूस किया था, तब हम भी सोचे थे पेपर बनाते हैं, पेपर बना, लेकिन ये मैं भी करता हूँ कि लेक के या रिवर के, लेक को स्पेशली किसी एक कोने में केज बना के वाटर हाइसिंथ को रिटेन रखना चाहिए। I was about to add this, sir. आपको उससे पहले दिखा दूं, this is a notebook that I am holding at this, and this paper जिसमें printing हुआ है, this is also water hyacinth. You can see how beautifully it shines, and अभी तो 2 हाथ खाली नहीं है एक साथ, तो I can you can see the paper out here. ये दिखाते तो आप भी शाइन कर रहे हो। हाँ। Very good. So actually, another thing which I want to add, I don't have much experience, then again I'll repeat, लेकिन मेरा 2-3 सालों में मैंने जो देखा है, like last 3 to 4 years I am doing this, और water hyacinth को आपने जैसे बताया ना, तो in our website we always highlight this thing, the problems we have highlighted, eutrophication, sunlight reach नहीं करता है, it is the another thing which I've seen कि कितने लोगों ने, there are people उन्हें क्या बोलते हैं ना, this fisherman community while fishing got entangled in water hyacinth और वो निकल नहीं पाए and they lost their life, ये एक था। और second, the reason why people nowadays they are focusing कि हमें eradicate करना है water hyacinth को, निकाल लेना है पूरा वो, लेकिन this is a wrong concept। मुझे जो लगता है सर, I may be wrong, please correct me if I'm wrong, what I think कि जैसे cars and motorcycles they are emitting fuel, वो कार्बन डाइऑक्साइड, वो कुछ भी मतलब जो भी धुआं होगा छोड़ रहा है, बट देन अगेन एट द एंड ऑफ द डे वी नीड द हेल्प ऑफ व्हीकल्स, राइट। उसको हम लोग निकाल नहीं सकते क्योंकि हम लोग यूज्ड टू हो चुके हैं। द सेम वे वाटर हाइसिंथ इज अ प्रॉब्लम फॉर फ्रीजन टेल। आई टेल अबाउट 2 स्पीशीज। देखिए 2 स्पीशीज है, दोनों जकाना स्पीशीज है लेकिन अलग है। 2 different species of jacana. One is pheasant tail jacana and another is bronze wing jacana. Pheasant tail jacana को problem हो रहा है water hyacinth से, but whereas bronze wing jacana is not facing any problem from water hyacinth. उनको water hyacinth चाहिए नीचे से, वो मतलब water hyacinth के नीचे बहुत छोटे छोटे मछलियां and like other insects will be there that they feed on. So that's why whenever like even in our website we always highlight that never focus on eradicating water hyacinth now, क्योंकि 300 सालों से पॉन्ड में इंट्रोड्यूस्ड हो गया। इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल रोमांटिक स्टोरी। लेडी हेस्टिंग्स को पटाने के लिए लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स गिफ्टेड वाटर हाइसिंथ फ्लावर्स, एंड देन जस्ट बिकॉज दे वर दिस, ये गोरे लोगों का होता है ना सर हमारे इंडिया में, एनी व्हाइट पीपल विल ब्रिंग एनीथिंग एंड दैट बिकम्स अ ट्रेंड। दैट्स हाउ फ्रॉम लाइक कैलकाटा वो पूरा इंडिया में फैल गया एंड बिकेम टेरर ऑफ बंगाल, उसका दूसरा नाम। तो वैसे ही लास्ट 300 200-300 सालों तक हम लोग वाटर हाइसिंथ को रखे, अभी अचानक से ले लेंगे तो बहुतों का घर भी उजड़ के हम लोग को, वी आर टेकिंग इट आउट। So control growth of water hyacinth is needed क्योंकि yes definitely everything that glitters is not gold जैसे होता है, so everything that is green doesn't mean it will be good for the environment.
और लेकिन थोड़ा बहुत भी whatever water hyacinth can do good to, उसके लिए control growth of water hyacinth is very much a necessity, I suppose. Tarunji, because Rupankar ji brought up Bengal, can I just respond very quickly to something that he has said, which is, you know what happens to water hyacinth in the East Kolkata wetlands? One indicator of a wetland being managed properly is the presence of a water hyacinth ring around the wetland. So if you look from the satellite maps and focus closely, if you have a ring of water hyacinth, that means this pond is functional. Water hyacinth is integral to the management of the pond banks, because these people who are not so formally educated, what they understood was over the couple of centuries, that what you have to do is basically put in a ring of about 1 meters at least around the pond bank. So using the principles of physics, the pond bank doesn't get destroyed without resorting to any kind of cementing of the pond banks, which destroys the biodiversity. You have the water hyacinth lacing, and so the water will continuously lash, but it will not lash against the shore. And the people who are attached to the bheri, to the maintenance of the bheri is what we call in Bengali, to these huge ponds, oxidation ponds, the people who are attached to this maintenance, they are regularly maintaining this water hyacinth lacing. There is nothing called waste in nature. When you talk about placing ecology and ecocentrism rather than anthropocentrism, then these are some of the things that you learn to understand the interactions between various things in nature, and see what is a problem somewhere else can be turned into an opportunity elsewhere. And that is how resilience increases. So small cities, especially in the context of today, small cities especially will need to learn about how to see its wealth and how to conserve it by dovetailing one thing with another. That is an important message. Thanks so much. I think in the spirit of the theme that we had, going beyond our current thinking, I think this very enriching discussion has, I'm sure, pushed the boundaries of thought for all of you as well. I think what you have shared about the work and the perspective that you have shared, I'm sure this going beyond current thinking, it would have a lot of these things will stay with you as well, each one of you, in terms of the way you've been working. तो ये देखिए, जब when you introduce this new city ना, वो उसके nocturnal होता है, ये उसकी रूट में रहता है और रात को चलता है उसके तने के अंदर, राइट? तो जाइलम फ्लोएम जो भी आप बोलते हो सबको खा जाता है वो प्लांट्स भी रिड्यूस होता है साइज में, राइट? इट्स ए बायो कंट्रोल. सो इट वाज अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब ब्राजील से लाए यहाँ पे, और हिंदुस्तान में जगह जगह इसको इंट्रोड्यूस किया. वी एज सिटीजन्स, वी रोड टू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, देन वी इसको हमने सरकार के थ्रू मंगवाया उसको. ये आज भी वो सबको सप्लाई करते हैं फ्री में. तो ये फ्री का आपका कंट्रोलर है वाटर हाइसिंथ का, राइट? पर वाटर हाइसिंथ, इफ इट इज इन एक्सेसिव ग्रोथ, इट्स एन इंडिकेशन ऑफ द यूट्रोफिकेशन ऑफ वाटर बॉडी. If lake is covered by water hyacinth, it means the lake is in the condition of death. Lake is dying, right? इसलिए वो जरूरी है, वो सबसे बड़ा इंडिकेटर है. When lake surface, और जब लेक सरफेस पूरा भर जाएगा वाटर हाइसिंथ से, तो आपका सनराइज भी नहीं जाएगा अंदर. बिल्कुल. तो वैसे भी ऑक्सीजन डेफिशिएंट और वाटर क्या वो लाइट लेस एनवायरनमेंट बनना शुरू हो जाएगा, है ना? फिर आपकी जानकारी के लिए मैंने हमने किया, देखिए हमने स्टडी भी बताया आपको. ये जब 1999 में जब हमने पेपर बनाया, उसको हमने ये भी इंट्रोड्यूस किया. तरुण जी, आपने सब्जेक्ट दिया आज का बियॉन्ड आवर करंट थिंकिंग. मुझे ऐसा लगता है जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं उदयपुर में, और वो ये है कि लेट अस रीअलाइन टू आवर ओन एनवायरमेंटल इथोस एंड ट्रेडिशंस. वो ज़्यादा ठीक होगा. और इसीलिए मैंने ये स्लाइड स्पेशली आपके लिए रखा आज की. व्हाट शुड बी आवर पर्सपेक्टिव व्हेन वी टॉक अबाउट द वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट. इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट व्हेन वी टॉक अबाउट द वेटलैंड कंजर्वेशन, इट इज अबाउट द पर्सपेक्टिव. सो आप उसको वेटलैंड को देखते कैसे हैं ना, कैसे उसको समझते हैं. एक अपने यहाँ पे उपनिषदों में, उपनिषद में एक बात कही हुई, मुझे इतना अच्छा संस्कृत पढ़ना नहीं आएगा, लेकिन उसका जो इंपॉर्टेंट मैसेज है वो है तेन त्यक्तेन भुंजीता. सो दिस वर्ल्ड इज क्रिएटेड बाय द गॉड, और हम इससे जो कुछ लेना वो क्या बोलते हैं, त्याग की भावना से ले. अगर ये अप्रोच है वेटलैंड के साथ भी, तो वेटलैंड बचेगी. और ये जब वेटलैंड की अप्रोच होगा, तो फिर आप इकोनॉमी की बात नहीं करेंगे, यू विल टॉक अबाउट द इकोलॉजी. सो इंस्टेड ऑफ टॉकिंग सर्कुलर इकोनॉमी, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सीवेज मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन, एंड टेकिंग समथिंग आउट ऑफ दिस सीवेज,
We will not talk about the economy, circular economy. We will talk about circular ecology. Getting my point? Then we will not see the wetlands as क्या कहते हैं जिसको, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए नहीं है. अब जब पर्सपेक्टिव बदलेंगे तो इकोलॉजिकल ग्रोथ के लिए हो जाएगा. और फिर इस बार का टॉपिक है बहुत अच्छा, वर्ल्ड वेटलैंड डे का, वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग. हमने कल यहाँ कॉन्फ्रेंस की और हमने कहा कि इफ यू आर नॉट एबल टू sustain the well-being of wetlands, how would you derive the well-being for the humans, right? तो ये जो पूरा अप्रोच है जिसको हम बोलते हैं एंथ्रोपोसेंट्रिज्म, इससे जाके थोड़ा इकोसेंट्रिज्म की तरह. और आई ऑलवेज आर्ग्यू विद द वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट लेक साइंस एंड लिम्नोलॉजी एंड हाइड्रोलॉजी एंड ऑल दैट. इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि व्हेन वी आर वर्किंग इन उदयपुर, और जब भी हमें कोई कहता है कि लेट्स कॉल द मीटिंग ऑफ स्टेक होल्डर्स, तो मैं लड़ाई कर लेता हूँ उनसे. हम हितधारक कैसे हो सकते हैं तरुण जी? हम तो हितकारक होने चाहिए. तो कहीं ना कहीं जरूरत है, मैं बार बार इस बात को आजकल कह रहा हूँ, उदयपुर में भी कह रहा हूँ, पूरे देश में भी कह रहा हूँ कि लेट अस चेंज आवर पर्सपेक्टिव. हर ये भी जो वर्ड है ना रिसोर्स, इससे भी मेरा बड़ा आर्ग्यूमेंट है. आप लाइफ सोर्सेज को रिसोर्सेज कैसे कहते हैं? से रिसोर्स, फिर उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन और पता नहीं क्या 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 है. तो लेट अस चेंज द पर्सपेक्टिव. फिर हमने पर्सपेक्टिव बदल दिया थोड़ा सा, नॉट जस्ट अबाउट द वेटलैंड्स, अबाउट ऑल नेचुरल रिसोर्सेज, राइट? तो कुछ बदलेगा. अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने वो अभी भी इसको ये मान लिया ना कि सारी जो दुनिया में चीजें हैं वो सारी ह्यूमन वेलबींग के लिए है. तो पहले तो हम वेलबींग को डिफाइन कर लें कि वेलबींग होता क्या है. In the context of Udaipur, not just 16 lakhs tourists which you showed in your slide, but we receive almost 20 to 20 lakh tourists per year. Sometimes when the peak season is there, we receive 2 lakh tourists per month. Now this is not, Udaipur cannot sustain that, right? So in order to increase the tourism facilities, hotels, resorts, we are cutting all our forests, our hills. इतना प्रेशर है झीलों के ऊपर. तो हमारा वेलबींग तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, चिड़िया का होगा कि नहीं होगा, मछली का होगा कि नहीं होगा, टूरिस्ट का वेलबींग हो रहा है. अच्छी खूब दारू पी लो और खूब स्विमिंग पूल में पड़े रहो. ये जो अप्रोच है ना, इसलिए मैंने कहा कि इकोनॉमिक ग्रोथ जब जोड़ते हैं उसके साथ उसको बदल देना चाहिए. वेटलैंड्स आर फॉर इकोलॉजिकल ग्रोथ, एंड व्हेन यू इंश्योर द इकोलॉजिकल ग्रोथ, तो उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ तो अपने आप होनी है ना. इसलिए तो टॉपिक है वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग. तो मैं इसलिए ये बैठा बैठा जब आपने अपना पहला स्लाइड अपना रिपोर्ट दिखाया तो मैंने ये थोड़ा सा फिर से डाला आपने उसमें, इसलिए वो एक आधा अधूरा रह गया उसके अंदर. तो उदयपुर के लिए बारे में जैसा मैं कह रहा था कि ग्रेट इंडियन वाटरशेड के ऊपर है और 3 बेसिन है, उसमें से 2 बेसिन अरेबियन सी की बेसिन है, एक गंगा बेसिन है. और इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्होंने बनाया नेशनल रिवर सिटी अलायंस. मोस्टली द सिटीज आर so located here along the Ganga, but Udaipur being in the Ganga basin, a very important city, so Udaipur has been included in the National River City Alliance, right? जैसा तरुण जी ने कहा, the government of India has proposed to declare Udaipur as the first Ramsar wetland city. तो ये जब मैं रामसर पढ़ रहा था उस वक्त ये राम मंदिर का भी इशू आ गया, तो उनका राम राम क्या मिलता है देखें इसको. पर्शियन लैंग्वेज में राम का मतलब होता है वन हु इज मर्सीफुल, दूसरा मतलब होता है ग्रोथ. और राजस्थान में सर तालाब को कहते हैं, लेक को कहते हैं. आप अगर जोधपुर बीकानेर जाएंगे तो वहाँ तालाबों के साथ सर लगा हुआ है, घड़ी सर, इस तरह से सर शब्द. तो मैंने कहा कनेक्शन बड़ा अच्छा है ये. बट ये जो मर्सीफुल और ग्रोथ और सर का मतलब सिर भी हो सकता है, होता भी है वहाँ पे, हेड भी होता है. इसको जरा सोचेंगे तो मुझे लगता है वो पर्सपेक्टिव आपको बना देता है. और इसीलिए उदयपुर में इतने सालों से काम करने, इट इज नाउ ऑलमोस्ट आई थिंक 31-32 ईयर्स. जब मैं तरुण था तब से काम कर रहा हूँ तरुण जी, तब तो मेरी उम्र हो गई. बट ये जो पर्सपेक्टिव है हमारी वेटलैंड्स के लिए, उदयपुर के लिए आता है. उदयपुर हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द मोस्ट रोमांटिक सिटी इन द वर्ल्ड. मैं उसमें थोड़ा परेशान हो जाता हूँ. मैं कहता हूँ यार ये उदयपुर रोमांटिक सिटी के नाम से क्यों जाना? उदयपुर में 4,500 साल पहले आयर सिविलाइजेशन था. आयर इज ए पार्ट ऑफ रिवर गंगा, जिसके अंदर पूरी लेक्स बनी हुई है. इतना हिस्टोरिकली, आर्कियोलॉजिकली सो इम्पोर्टेंट सिटी. देन वी हैव महाराणा प्रताप, जिसका इतना बड़ा नाम है. ग्रेट इंडियन वाटरशेड पे हम लोकेटेड है. हम क्या किस तरह से अपने को, अगर वो मैं बहुत कमर्शियल वर्ड इस्तेमाल करूं तो हाउ यू आर सेलिंग आवर सिटी, राइट? तो अभी तो शुरू में जो आपने कहा तुम जी से काम किया, हमने लोगों को अवेयर करना शुरू किया, बेसिन अप्रोच क्या होता है. गुड टॉक. मैं अभी अपनी स्लाइड में बताऊंगा कि वेटलैंड इज नॉट जस्ट, और आप सामने क्यों बताऊँ, आप सब लोग जानते हैं, इट नॉट जस्ट वाटर बॉडी. सो यू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वाटर बॉडी. रूपा जी ने बताया कैसा बड़ा नेटवर्क है नदी का और सबका.
तो एक तो इम्पोर्टेंस है, तो मैं तो खैर बहुत सारी बातें एक साथ कर रहा हूँ। ये जो मैं आपसे कह रहा था, हाउ इट इज कनेक्टेड टू रिवर गंगेश उदयपुर बेसिन, अपर बेड़च बेसिन जिसको कहते हैं। तो हमारे यहाँ से पानी बहता है और फिर राजस्थान से होता हुआ बनास और चंबल और यमुना और गंगा फिर द्रुपा जी के यहाँ पहुँच जाता है। हम शायद यहाँ कुछ गंदगी करते होंगे तो आपके यहाँ आ जाती है, हो सकता है शायद ऐसा। पर हाँ, वी हैव मार्शीर इन वन ऑफ आवर लेक, and this is the Ganga Marshir, this is the Himalayan Marshir. So recently, through court case and through public pressure, this Badi Lake, which is very important lake, which is upstream lake, just 10 kilometers from this place where I'm sitting, has been declared as the Marshir Reserve. Right? So now, मैं इसकी मीटिंग में गया था 3 दिन पहले, तो कह रहे थे कि अरे वाह, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान has declared this as a Marshir Conserve. How can we increase the ecotourism here? मैंने उससे कहा फिर बदल दिया आपने मामला. Why ecotourism? Right? So what is your approach? That is again and again I'm saying, huh? और ये इंटरकनेक्टेड लेक्स, सम ऑफ द लेक्स आई हैव शोन। सो ये जो आप देख रहे हैं तो मेजर लेक्स हैं, जो बड़ी मैंने आपसे कहा विच हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द मार्शियर कंजर्व, वो ये वाला लेक है। देन वी है पिछोला, फतेह सागर, उदय सागर, इस बार डाउन स्ट्रीम में भी एक लेक, बट ये सेंट्रल रिवर है जिसको मैं आयट रिवर कह रहा हूँ, है ना। इस रिवर के इस तरफ दोनों तरफ देयर नंबर ऑफ स्मॉल पॉन्ड्स। उनका रोल क्या था जो आपने अपने पहले रिपोर्ट के प्रेजेंटेशन में बताया था? द रोल वाज टू कंट्रोल द फ्लड, moderate the flood, and to recharge the groundwater, both. So Udaipur is essentially a hard rock area where phyllite and schist and some zones are there which are, you can say, as the fault zones and fault zones. उन्हीं से रिचार्ज होता है। तो हमारे जो पुरखे थे ना, पूर्वज, हाउ इंटेलिजेंट दे वर, उन्होंने उसी जगह लोकेट किया जहां पर ये इस हार्ड रॉक एरिया में पानी पर्कुलेट हो सकता है। And these lakes were never been used as drinking water source. We were having good system of बावड़ीज, स्टेप वेल्स। इतनी खूबसूरत बावड़ियां हैं, और सारी बावड़ियों को बनाने के पीछे महिलाएं हैं, राइट। बावड़ियों के नाम भी अधिकतर जगह महिलाओं के नाम पे, माँ जी की बावड़ी, माँ मीन्स मदर, यू नो, माँ पे मंदिर है, सब कुछ है। और फिर मंदिर भी क्यों है? सी पिछोला जो लेक बड़ी फेमस, उसके आसपास सारे मंदिर हुआ करते थे। अब वो सारे मंदिर तो इतने सारे, उनके पास बड़े बड़े होटल्स हैं, मंदिर क्यों बने ये भी सोच सकते हैं। ये भी सोचा जाना चाहिए। एनीवे, मैं बहुत सारी बातें, और ये जो मुझे बताना चाहिए कि अभी तो खैर पानी है, लेकिन मैं पिछोला का 2 साइड आपको दिखा रहा हूँ। एक बार पूरा सूखा हुआ और एक बार पानी से भरा हुआ है। ये हमारा कैचमेंट है। पहाड़ियों को हम पूरी तरह से काट रहे हैं। व्हेन यू प्रेशराइज द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द हिल्स, उन्होंने एक पॉलिसी बनाया जिसका नाम था हिल पॉलिसी। हिल पॉलिसी का मैंडेट क्या था? हाउ कैन वी रेगुलेट कंस्ट्रक्शन इन द हिल्स? अगेन द इशू पर्सपेक्टिव, यू नो। दूसरा जो जिसके लिए हमने उदयपुर में बहुत कोशिश कर रहे हैं, और समहाउ वी आर एबल टू कन्विंस द गवर्नमेंट कि नॉट जस्ट टॉक अबाउट द सिंगल वाटर बॉडी, टॉक अबाउट द एंटायर बेसिन, राइट। सो as a researcher also, we are working with the government of Denmark on integrated water resource assessment of this Ayurvedic basin. In 2008, we prepared a report on IWR assessment of this area. थोड़ा बहुत उस पर काम करें, but the thing which is missing in the planning in Rajasthan and Udaipur and perhaps in the country, that we do not talk about the basin, we just talk about the water body, right? It is said about the lakes and the wetlands, they are the reflection of their catchment areas. So unless you protect the catchment, right, how would you conserve the wetland? Anyway, तो मैं जो कुछ कह रहा हूँ आपसे, ये सब जो हम कर रहे हैं शहर में, अपने साथ हम लोगों को इकट्ठा करते हैं चाय की थड़ी पे भी, और यही सारी बातें करते हैं हमारे लोकल डायलेक्ट में। देन एक्सेसिव विड्रॉल, उदयपुर में तो कई बार ये उदयपुर का वाटर साइकिल बड़ा अजीब गरीब है। यहाँ पे हर 10 साल में कभी कभी कुछ एक्सट्रीम फेज आए, बट हर 10 साल में 2-3 साल अच्छी बरसात होती है, फिर थोड़ा सूखा आ जाता है। वो जो लेक्स बनाई आज से 300-400 साल पहले, वो इस तरह से बनाई कि जब एक्सेसिव रेनफॉल होगा तो वो वाटर को रिटर्न करेगी, और जब रेनफॉल नहीं होगा आने वाले सालों में तो वो पानी काम आएगा, थ्रू रिचार्ज भी और थ्रू डाइट को एक्सट्रैक्शन करने के लिए। अब भी हो रहा है कि अगर पानी खत्म हो गया तो हम झील के अंदर से भी पानी निकाल, मतलब उसके अंदर ट्यूबवेल खोद के भी पानी निकालते। नाउ व्हेन यू ड्रिल द ट्यूबवेल इन द वाटर बॉडी, upstream of the embankment and downstream of the embankment, what would happen to the embankment? What would happen to the bedrocks? Those who understand geology, that it may cause shattering of the rock when especially it is submerged. तो ये बात साइंटिफिक तरीके से, दूसरे तरीके से उदयपुर के इतिहास को जोड़ के थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। ये मैं कई बार कहता हूँ कि इतने अच्छे टूल्स अवेलेबल है मॉडलिंग के। आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन वन हाइड्रोलॉजिकल मॉडल। तो ये सिंपल जो हम घर में हिसाब किताब करते हैं, क्यों नहीं कर सकते? हाउ मच वाटर आवर लेक्स आर रिसीविंग, कितना उसमें से पानी निकालना है, क्या वाटर साइकिल है, थोड़ा पानी बचा कर लीजिए मछली के लिए। जैसे हम रिवर्स में कहते हैं ना, तरुण जी से पिछली बार भी कहा था, मिनिमम फ्लो इन द रिवर्स। सो लेट अस टॉक अबाउट द मिनिमम पुल लेवल इन द लेक्स, मिनिमम कंजर्वेशन पुल। एंड दिस प्रॉब्लम इज देयर व्हेन देयर इज नो पेरिनियल रिवर सिस्टम।
जहाँ पे पेरिनियल रिवर्स है वहाँ ठीक है, वो आके भर देगा उसको, बट जहाँ नहीं वहाँ क्या करें? एंड मेनी टेक्निक्स अवेलेबल. सो मॉडलिंग होता है, रिसर्च इंस्टीट्यूशन होता है, सरकार के कंसल्टेंट सरकार में बनता है, फील्ड में उसके बारे में कोई 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 न तो वहाँ के लोकल अफसर्स का मैनेजर्स का कोई कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है. तो ये सब चीजें किताबों में रह जाती है. हिंदुस्तान में बड़े बड़े मॉडलिंग एक्सपर्ट्स हैं जो वर्ल्ड में माने जाते हैं, पर एक लेक के ऊपर लेके एक 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 बेसिन पे लेके एक हाइड्रोलॉजिकल मॉडल बना के उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए. लाइक हम सिटीजन्स की बहुत और एकेडमिशियंस की भी और एक्टिविस्ट की भी लिमिटेशन से हम ये काम कर नहीं पाते. हाँ, ये हम कह पाते हैं बार, कई बार कोर्ट के कारण से हमें मदद मिल जाती है तो हम कुछ कर लेते हैं. एक और प्रॉब्लम जो जो उदयपुर में और पूरे हिंदुस्तान में हो रही है, और मैं ध्रुवा जी से भी कहूंगा, लेक. So there are two parameters. One is we call the FTL, and other is the MWL. Now here the government plays. गवर्नमेंट कह दो, लैंड माफिया कह दो, कुछ भी कह दो, जो भी मिलकर काम करते हैं आपस में. तो वो क्या करते हैं कि पहले कहते थे कि, और वो वेटलैंड कंजर्वेशन रूल्स में भी है कि the boundary of lake should be decided based on the maximum water level, and maximum water level is decided based on the highest rainfall of last 30-40 years. जो लेवल्स ने लेक ने अटेन किया रेनफॉल के बेसिस पे. नाउ दे हैव चेंज द पैरामीटर. वो कहते हैं कि ठीक है यार, वो अर्बन लेक्स हैं और जमीन है नहीं, तो लेट्स डिफाइन देम ऑन द FTL. So what is the difference between FTL and MWL? If there is a slide, ये रहा. So when water flows over the embankment, right? ये जब बरसात होती है तो पानी मैक्सिमम फुल जाता है उसमें से निकलने से पहले. वो जो पोर्शन है वो कहलाता है, वो जो लाइन है वो कहलाती है MWL, मैक्सिमम वाटर लेवल. एंड दिस एरिया बिटवीन द MWL and FTL is very important. It's a shoreline area. You call it the littoral zone. The soil is hydrology. All the ecological processes which are essential for the the sustenance of this wetland, वो वहाँ पे होते हैं. हमने क्या किया कि लेक का डेफिनेशन बदला है और क्या किस पे कर दिया? FTL पे. दिस इज अगेन दी प्रॉब्लम. और ये बड़े स्मार्टली वो ऐसे कारण से हमारा जो पिछोला है इट इज ऑलमोस्ट 30% कम हो गया 10 सालों के अंदर. तो ये मॉर्फोमेटिकल श्रिंकेज जो है ये बड़ा बड़ा खतरनाक है. इसके लिए हम लड़ी बड़ी कर रहे हैं. देन यहाँ पे ओल्ड इम्बैंकमेंट्स हैं जो स्टेट टाइम में बने, राजा महाराजा ने बनाए, उनका कोई ड्राइंग सरकार ने, अब इतना अच्छा स्कैनिंग टूल्स अवेलेबल है, सरकार के पास पैसा होता है, प्रशासन के पास होता है, सरकार का बहुत बड़ा प्रोग्राम है रिहेबिलिटेशन ऑफ डैम्स. तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं कि सरकार के लेवल पर अच्छा नहीं सोचते हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट ने इतना अच्छा स्कीम लाया, पिछले बजट में भी था, तो ओल्ड डैम्स का रिहेबिलिटेशन के लिए, तो वो स्टडी के लिए टूल्स भी हैं. नॉर्मली क्या होता है कि जो लोकल लेवल पे एक्टर्स प्ले करते हैं वो इसको होने नहीं देते. तो आपके सारे इम्बैंकमेंट खतरे में. बिना इम्बैंकमेंट के तो कोई लेक होगी नहीं, वेटलैंड होगा नहीं. हाँ, कुछ नेचुरल वेटलैंड्स उनको छोड़ दीजिए जो डिप्रेशन में बने हैं और नेचुरल है, बाकी तो अधिकतर मैन मेड है. हाँ, तो ये मैंने आपसे बताया कि किस तरह से उन्होंने ऑल्टर कर दिया लेक बाउंड्री को बेस्ड ऑन दिस चेंजिंग द पैरामीटर फ्रॉम MWL टू FTL. तो पिछला एजमेंट जो आप देख रहे हैं ना, ये व्हाइट लाइन के वहां तक हुआ करता था, अब इसको ये रेड लाइन जो आपको दिख रही है वहां तक कर दिया. एनीवे, वन वेरी इंपॉर्टेंट इशू, किसी भी वेटलैंड के लिए उसकी कोई इकोसिस्टम, उसका फ्लोरा फोना बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट होता है. उदयपुर के अंदर तो लेक के अंदर एक बहुत अच्छा टापू था, आइलैंड, उसको बेच दिया. उस होटल आया, रेफल्स का होटल है बहुत बड़ा. रेफल्स तो उसका बाद में आया, लेकिन जिसने बनाया वो लोग अलग है, वर्धा एंटरप्राइजेस. तो सरकार ने डिफाइन कैसे किया? सरकार नहीं, मतलब जो होटल वाले की तरफ से बड़े बड़े लॉयर्स थे सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने कैसे डिफाइन किया? उन्होंने कहा कि भाई ये आइलैंड, ये टापू तो है झील में आइलैंड, पर जब पानी बढ़ता तब तक यहीं तक पानी बढ़ता है, जो ऊपर है ना इतना, ये बाहर रहता है तालाब से. दिस इज आउटसाइड द वाटर बॉडी, so construction can be permitted. You're getting my point, Dhruva ji? What I'm saying? So when water spread would be there, the lake would be full of water. A portion which is a summit portion of the hill or the island, which would remain outside, right? It would not be completely submerged. The portion of island which is outside, which is not submerged, they declared it as a portion outside the water body. So they measured in a vertical plane, right? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये सारा इशू पर्सपेक्टिव को ठीक करने का है. पर्सपेक्टिव ठीक होगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा. खैर ये प्रॉब्लम तो सब जगह, जो आपने सीवेज की बात कही अभी, हमारे शहर में तो हमने स्टडी किया विथ CSIRO ऑस्ट्रेलिया, इट वाज पब्लिश्ड बाय द एल्सेवियर. क्या तरह के कॉन्टामिनेंट्स हमारे वाटर बॉडीज के अंदर, लेक के अंदर, रिवर के अंदर. ये रिवर जो आपके आ रही है बंगाल में, इतने सारे कॉन्टामिनेंट्स, APIs, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, मेडिसिन, पता नहीं क्या क्या. इसी कारण से इज इफेक्ट ऑन एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम एंड द रिप्रोडक्टिव हेल्थ. किस तरह का वेलबींग कर रहे हैं आप इंश्योर? इतना केमिकल्स बढ़ा रहे हैं, इतना टूरिज्म बढ़ा रहे हैं, और फिर उदयपुर शहर में इनफर्टिलिटी क्लिनिक खुले जा रहे हैं. कैसे चलेगा ये? मैं लास्ट पे शायद मुझे लगता है कि हाँ, ये भी मैं कहता हूँ कि जो वेटलैंड्स के साथ जो इकोनॉमिक की बात करते हैं उसमें टूरिज्म की बात है. मैंने कहा इसको ही पर्सपेक्टिव बदल दो यार. उसमें जो पक्षी आते हैं ना बहुत सारे, हमारे यहाँ पे कल किसी ने प्रेजेंटेशन दिया कि कुल 370 माइग्रेटरी बर्ड्स जो अभी तक आइडेंटिफाइड है
मुझे नहीं पता डेटा में किससे बोल रहा हूँ, उसमें से 310 का हैबिटेट तो वेटलैंड्स ही है। सो एग्जैक्ट नंबर फैसले नहीं, लेकिन 370 का 310 कितना रेशियो होता है, वो हमारे रियल टूरिस्ट हैं, वो आपके पूरे इकोलॉजिकल प्रोसेस का सस्टेनेंस करते हैं। तो थोड़ा बदल दें, ये भी बदल दें पर्सपेक्टिव। लेक, so there are two parameters, one is we call the FTL, another is the MWL. Now here the government plays, गवर्नमेंट कह दो, लैंड माफिया कह दो, कुछ भी कह दो, जो भी मिलकर काम करते हैं आपस में। तो वो क्या करते हैं कि पहले कहते थे कि, और वो वेटलैंड कंजर्वेशन रूल्स में भी है कि the boundary of lake should be decided based on the maximum water level, and maximum water level is decided based on the highest rainfall of last 30-40 years, जो लेवल उसने लेक ने अटेन किया रेनफॉल के बेसिस पे। नाउ दे हैव चेंज द पैरामीटर, वो कहते हैं कि ठीक है यार, वो अर्बन लेक्स हैं और जमीन है नहीं, तो लेट्स डिफाइन देम ऑन द FTL. So what is the difference between FTL and MWL? If there is a slide here. So when water, और सबसे बड़ी बात स्मार्ट सिटी का पर्सपेक्टिव, व्हाट इज स्मार्ट? I defined that in the context of उदयपुर, and you know, मैं जो ये सब कह रहा हूँ, ये सब चीज़ हम उदयपुर में करते हैं। एज वॉलंटियर हम काम करते हैं, जाके सफाई करते हैं, हमने सारे प्रोजेक्ट्स बनाए, रिसर्च करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट में केसेस है, सब कुछ है। पर मुझे बार बार जाके ये लगने लगा है कि सिटीजन्स के लेवल पे भी, एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे भी, और सरकार के लेवल पे भी, और हमारे जैसे एकेडमिशियंस के लेवल पे भी थोड़ा पर्सपेक्टिव बदलना है। तो स्मार्ट सिटी क्या होता है? तो हमने कहा कि जब तक आप सेफ वाटर को इंश्योर नहीं करेंगे ना, तब तक क्या स्मार्ट हो जाएंगे। सो द एस ऑफ स्मार्ट स्टैंड्स फॉर सेफ वाटर एंड सैनिटेशन, द एम स्टैंड्स फॉर टोपोग्राफी भी मेंटेन होना चाहिए, उसका हिल्स, माउंटेन्स जो भी है वहाँ पे। A stands for, and it should be considered as aquifer recharge. अगर आपका एक्विफर्स में पानी नहीं है तो फिर क्या कर लो? आर आपका रिवर्स और लेक्स मैनेज रहे, हमेशा कंजर्व रहे। और सबसे बड़ी बात जो मैंने शुरू में कहा, इंस्टेड ऑफ गोइंग बियॉन्ड लेट्स गो बियॉन्ड द थिंकिंग एंड लेट्स गो टू व्हाट वी कॉल द इंडियन पर्सपेक्टिव और द पर्सपेक्टिव ऑफ आवर सोसाइटी। हम ये कहते हैं हिंदुस्तान में राज और समाज ने मिलकर तालाब बनाए थे। तमिलनाडु के अंदर वंदना शिवा ने एक आर्टिकल लिखा, वहाँ की सारी लेक्स को मैनेज वहाँ की सबसे पिछड़ी, गरीब, या जिनको आप दलित मान सकते हैं, वो कम्युनिटी कर दी थी। There was no taxation, right? In all agroclimatic zones of the country, जिनको हम कहते हैं traditional water sources, they were developed and created by the community. It was a community-based, development conservation management, right? हम अब पानी को पूजा करते हैं। अभी मैं रामायण पढ़ रहा था, तो उसमें जब गंगा को पार करते ही ये राम भगवान और सीता जी तो पहले प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़ के, हम आपके पार जाना चाहते हैं। वो पर्सपेक्टिव हमने बदल दिया ना। और हमारी कल्चर क्या, हर छठ पूजा क्या है ये? तो उन्होंने कैसे कल्चर में इम्बाइब किया कि आप लेक को वर्शिप करोगे, रिवर को वर्शिप करोगे, पानी को वर्शिप करोगे, पूजा करोगे तो पानी साफ रखोगे। और मैं केवल हिंदुज्म की बात नहीं कर रहा हूँ, इन ऑल रिलीजन्स, इन सारे एलिमेंट्स को उन्होंने स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस दिया है। तो मैं इतना ही कहूँगा और यहीं से खत्म करता हूँ कि थोड़ा सा हम पर्सपेक्टिव को बदलें, 10 तक 10 पूंजी था, उसी से चलें। तरुण जी, काफी मेरी तरफ से इतना। I'll be presenting the insights from our report titled From Definition to Conservation, a study on urban wetlands of India. So our report is divided into 4 chapters: definition, advantages of urban wetlands, declining urban wetland scenario, and looking at urban wetland management in India. If you look at the right side of the slide, wetlands are broadly classified into 4 categories: inland natural, inland man-made, coastal natural, and coastal man-made. And there are about like 750,000 wetlands in India, where majority of wetlands are concentrated in West Bengal, followed by Uttar Pradesh and Orissa. So when we look at the definition of wetland, Indian definition of wetland as per Wetland Conservation and Management Rule 2017 exclude different kind of artificial wetland made for drinking water, for recreational purpose and all, as compared to Ramsar Convention, which includes a lot of these other kind of wetlands. So secondly, when we look at the advantages of urban wetlands, they contribute a lot to groundwater recharge, flood mitigation, wastewater filtrations, and so on. In case of Buller Lake in Kashmir, the lake has been significantly contributing to flood control in Kashmir. So in the end of the chapter 2, we have put a spotlight on East Kolkata Wetland. And East Kolkata Wetlands treats about 65% of sewage produced in Kolkata city. So today our speaker will be talking in detail about East Kolkata Wetland. So moving forward, chapter 3 presents declining urban wetland scenario in India.
So these are a couple of factors that leads to wetland decline in India. One of them being waste pollution, excessive tourism, illegal mining of wetlands, encroachment, and lack of public awareness and engagement. So here there's a spotlight on Deepor Beel. Apart from rapid urbanization and improper waste management, another significant factor contributing to decline of Deepor Beel is due to invasion of water hyacinth. Today our speaker has been working in the area, will be talking about using water hyacinth in making of paper, thereby clearing the wetlands of Guwahati. Chapter 4 delves into urban wetland management. The different gaps present in urban wetland management are lack of inclusion of wetland in urban planning, governance, and there is very little documentation and research on urban wetlands. There has been significant research on wetlands, but lesser research in regards to urban wetlands. So it is very much important to start thinking about strengthening governance, involving local community, including NGOs and CSOs for strengthening urban wetland management in India. So in case of Udaipur, Udaipur is one of such example where there has been significant contribution from citizens and civil society organization in terms of wetland and lake management. Apart from the consistent effort of civil society organization, there has been significant cleaning drive both by CSOs and citizens, followed by there are a couple of industry-led efforts like Hindustan Zinc has set up a couple of STPs in the city. And even the different government missions like smart city missions have been focusing on management of lake in Udaipur. So thank you very much for patient listening. Why, in your opinion, have wetlands traditionally stayed away a little bit from the citizen consciousness? They are like those who are engaged, definitely they understand the importance. But if we were to think about, especially in smaller cities, that people do think a lot about rivers, ponds, mountains, hills, but as a geographic feature, as an important ecosystem, which is present in a lot of cities, especially in smaller cities, are there reasons that wetlands as an ecosystem have not been extremely present in the mainstream consciousness of people and communities? And is there a way in which this can be changed? So one quick thought from one of you. I just want to, my thing, my context is different because जो हो चुका है वो हो चुका है, उसको बदलना है अभी बस. So now we like rather than कि कैसे हुआ क्यों हुआ वो सोच के अभी उसको बदलना है. मुझे मैं सभी को एक ही बात कहता हूँ कि जैसे कोई भी चीज का अगर वेटलैंड के बारे में भी सोचते हैं, सीवेज वगैरह सब कुछ का, लेकिन एक छोटा सा चीज है जो होता है कि एट द एंड ऑफ द डे वो प्लास्टिक पोल्यूशन वाला चीज आप घूम फिर के आ ही जाता है. वेटलैंड में भी सेम थिंग है, लेकिन देयर इज डंप यार्ड इन आवर वेटलैंड दीपोर बिल, उसके पास में बड़ा सा डंप यार्ड. आई जस्ट थिंक इट इन डिफरेंट वे कि लोगों को जो वेटलैंड कंजर्वेशन तभी स्टार्ट होगा जब आप कोई वेटलैंड के पास अपने फैमिली को लेके दोस्तों के साथ घूमने जा रहे हो, एंड इवन इफ यू आर टेकिंग आउट अ सेंटर फ्रेश और उसको खा रहे हो तो वो रैपर वहां मत फेंको. That's how I think wetland का conservation will start in right current moment. वो इतना सा काम अगर वो लोग करना चालू कर दे तो बाकी अपने आप चालू, मतलब it will be automatically going on. इससे ज्यादा तो मेरे हाथ में कुछ है नहीं, मतलब लोकल सिटीजन कर ही क्या लेंगे, सब मिलके हम लोग तो कुछ ना कुछ कर ही रहे ना. तो सिटीजन के लिए, सभी के लिए बस इतना ही है यार. आप वहां पे जा रहे हो, यू आर स्मोकिंग, यू आर ड्रिंकिंग अल्कोहल. I get interiors inside the jungles and I have seen एकदम I went inside around 10 to 15 kilometers inside this jungle called Garbhanga, and मुझे वहां पे I could not, उस दिन मेरा कैमरा नहीं था. I got a beautiful shot, मुझे मिलने वाला था. I got this Kingfisher beer का bottle and on top there was that particular Kingfisher जो बैठा था ऊपर. वाह. So ये शॉट तो बहुत बढ़िया होता, लेकिन यही पता चलता कि 14 किलोमीटर अंदर जाके उनको बियर पीना था. मजा आ गया, बट व्हाई डिड यू थ्रो दैट बॉटल इनसाइड? तो एटलीस्ट ये छोटा छोटा चीज अगर लोग बंद करे तो वाटर बॉडी, वाटरफॉल सब वो दे विल नॉट डाई, वाटर वोंट डाई. थैंक यू. बस इतना ही था मेरे साइड से. मैं ऐड करूं? हाँ जी, हाँ जी. तो तरुण जी वैसे मैं कह चुका, और अभी रूपंकर की बात से ये कि जंगल और वेटलैंड से ना वो प्लेजर से प्रेयर की तरफ जाना पड़ेगा. मतलब वो तो आप जो कह रहे थे तरुण जी, जो मेनस्ट्रीम डिस्कोर्स है पूरा का पूरा वेटलैंड कंजर्वेशन का, मैनेजमेंट का, वो डिस्कोर्स ही थोड़ा गड़बड़ है ना. इसलिए मैं बार बार चेंज कर रहा हूँ, कह रहा हूँ बात को कि इस डिस्कोर्स को बदलिए, सारी टेक्नोलॉजीज को बदलिए. शब्द बदलेंगे, विचार भी बदल जाएंगे. तो ये प्रॉब्लम सारी है कि जिस तरह से हमने वेटलैंड्स को समझा है, एक तो वेटलैंड के बारे में लोगों की समझ ही सही नहीं कि वेटलैंड होता क्या है. कई बार कहते हैं साहब वेटलैंड है तो सीवेज के पॉन्ड को बचाना चाहते हैं.
है ना? तो सबसे बड़ी बात है कि आप ये जो मेन स्ट्रीम डिस्कोर्स ऑन नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट है, स्पेशली ऑन अबाउट वाटर, इस डिस्कोर्स को बदलिए। और फिर अपने जो एक ठीक से पर्सपेक्टिव लाइए, जो अभी आप भी कह रहे थे इको सेंट्रिक, है ना, उस तरह के लाइए। इतना ही जवाब मेरा। Dhrubaji, any final parting words? Yes, so I've been listening and learning a lot, and my final parting words will agree with what Anil ji observed, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि अगर हमारा एथिक्स ठीक नहीं होगा तो संरक्षण तो कहते हैं हम, but it is not संरक्षण, it is actually सर्वाइवल। हम अपने संरक्षण के लिए हमारे आसपास में जितने सारे लाइफ फॉर्म्स है उसको सही नजरिए से देखें, वो सबसे बड़ी सीख है, और वो फैमिली से शुरू होता है। तो मेरा मैसेज ये रहेगा कि पेरेंट्स, हाँ, माता पिता जो है वो अपने बच्चों से बैठ के थोड़ा ज्यादा बात करे, और अपना जो जीवन है वो जीवन में रिस्पॉन्सिबल लिविंग, हाँ, वो रिस्पॉन्सिबल लिविंग का शुरू करे। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे वुड बी अ गुड प्लेस फॉर दैट, जहां से रिस्पॉन्सिबल लिविंग के बारे में सीख शुरू हो सकती है। बच्चों के साथ थोड़ा ज्यादा टाइम बिताए, ताकि उन लोगों को, बच्चों को ठीक से सीख मिले। नहीं तो वो जो समाज के कंपोनेंट्स है, जो आने वाले दिनों में समाज को आगे ले जाएंगे, वो अगर ठीक से नहीं सीखेंगे तो हमारा जल, जो मतलब जल का दूसरा नाम जीवन है, तो जीवन का जो अर्थ है वो अर्थ नहीं समझ पाएंगे और वो ठीक से जी नहीं पाएंगे। Personally, I will say one thing which is a very personal thing. I do not appreciate excessive growth of cities, because I think cities and villages both need to grow. नहीं तो वो जो लालच है और वो जो मतलब इंटॉलरेंस है, ये सब चीजें बहुत बढ़ जाते हैं। हम सिर्फ अपना कितना हम एक्सट्रैक्ट कर सके उसके बारे में सोचते रहते हैं, पर बच्चों को दूसरों के साथ जीना, लाइफ फॉर्म्स के साथ जीना सिखाने की जो जिम्मेवारी है हम सबके, उसको उसके तरफ देखना पड़ेगा। I think that is the most important message, because it starts from the home. True. Thanks so much. I think that reminds me कि Ramanwar Lohia, he used to call the citizens Antwasi. You know, the term that he had for citizens was Antwasi. कि शुरुआत जब हुई थी ह्यूमैनिटी की, सिविलाइजेशन की, पानी ढूंढते हुई थी, एंड अंत का ऑपोजिट इज आदि. सो दोज हु वर एट द बिगिनिंग ऑफ टाइम वर आदिवासीज, एंड people who are in cities are probably coming close to the end of the time, तो इसलिए उनको अंतवासी बोलते थे. And the irony would be that आदिवासी भी पानी ढूंढते हुए पाए गए थे पहले, और if things keep going the way they are going, अंतवासी would also be looking for water. So I hope that if something that this conversation and the work that all of you have been exemplifying in your daily lives is testament to the fact that water is Jal Jeevan hai, water is life, and your work would definitely inspire, and we are glad that we were able to play a small role in bringing out these amazing perspectives from the three wetlands, and which are part of a bigger ecosystem, of course, in these cities of Udaipur, Kolkata, and Guwahati. And this is a work in progress for us. It has enriched our understanding of these three wetlands, and we'll continue to improve on it. Add these perspectives. We'll be in touch with all of you as we move forward. It is a living document. We'll share the reports soon, and we hope to Have to launch the document. yes, Just yeah, 1 minute will take. We haven't done the ceremonial launch of the document. Namisha, if you can share the link. Thanks a lot, and we hope to have your perspectives on the report as we add further on it. Udaipur was the city that we recently visited, and the part on it is still being worked upon, and we are planning to make another visit soon, because a lot of the focus of this work that we are doing is on bringing communities and citizen voices, especially in smaller cities, and how to get smaller cities to the forefront of climate change, and what some of these perspectives can do, how we can change the current level of thinking about various elements that have an impact on climate change, including wetlands. So, and I would like to formally thank again all our panelists
for taking out time on this very important day. I'm sure every day is a wetlands day for you, given that you live by the wetlands. And but we feel very special that you have chosen to spend some of your time on the day that world celebrates as World Wetlands Day to enlighten us about some of the work that you're doing. Uh, all the three cities that we have very important wetlands. Two of them are Ramsar sites. Udaipur is in contention as we speak. I think Udaipur has already put in the nomination for being classified as a wetland city. So I think we are here to delve into the critical role that urban wetlands play in our cities and how we can elevate the importance that they have in the lives of citizens and communities that support them. And it also, we're trying to align our discussion with the theme of the World Wetlands Day, which is the human well-being and wetlands. Thank you to our panelists for the incredible perspective. We had been very excited to have you here and to hear from you. And we hope we can continue these conversations and continue learning together. If any of you come to Dehradun, please reach out to us if you're anywhere in Uttarakhand. We'd be more than happy to meet you in person. And likewise, if anybody in our team ends up coming to your places, we will be in touch. Yes, yes. Thank you again. We'll send you links with the report if there are any things, especially in the places that you're working or anywhere else that you know more about. We would love to get on a conversation to kind of build on the work that we're doing. Again, this is just a draft, and we are hoping to keep on augmenting this the work that we are doing. And thank you to the Thank you listeners. all. Mm. Thank you. Thank you, Dhruv, all. Thank Thank you, you. everyone. Bye-bye. Right. Bye.